Good morning, students. This is your SST class, and today we are going to start a new chapter. So, in this chapter, we will study about landforms. The various types of landforms that we just saw are formed due to the two types of process. मैंने आपको प्रीवियस ऑडियो में यही बताया है कि जो भी हमारे लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं वो दो प्रोसेस की वजह से होते हैं. फर्स्ट इज़ इंटरनल एंड सेकंड इज़ एक्सटर्नल. इंटरनल वो होगा विच इज़ हैपनिंग इनसाइड द अर्थ, एंड एक्सटर्नल वो होगा विच इज़ हैपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब उसके ऊपर. So now I am going to play the video. In this video they will explain the internal and external process of earth. You can write important points in your notebook. So watch the video carefully, okay? Formation of major landforms. Have you noticed how the earth's surface looks different in different places? Some areas have high mountains. Some areas have vast stretches of flat land. Other areas are covered in hot sand with towering sand dunes, while some areas have deep pit-like gorges. These different natural features of the Earth's surface, like mountains. अब देखो, प्रीवियस जो ऑडियो में मैंने आपको बताया था कि लैंडफॉर्म की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है. तो लैंडफॉर्म की डेफिनेशन जो थी नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, है ना, यही थी ना. तो नेचुरल फीचर्स जो होते हैं अर्थ का सरफेस बनाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, लैंडफॉर्म बोल देते हैं. अब कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं बिल्कुल फ्लैट लैंड होता है, कुछ एरियाज़ होते हैं जो सैंड के साथ कवर होते हैं, और कुछ डिफरेंट और एरियाज़ होते हैं. तो हेयर मेन देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ लैंड, जो कि ये फीचर्स हैं लैंड के जो कि क्या बना देते हैं, अर्थ का सरफेस बना देते हैं, जिसको हम लैंड फॉर्म बोल देते हैं. ओके. Mountains, plains, sand dunes and deep valleys are called landforms. But how do these landforms develop? What forms them? Let's find out. Landforms are either created by internal or by external processes. Internal processes refer to the processes that occur inside the earth, whereas मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि दो प्रोसेस की वजह से जो है लैंडफॉर्म अक्कर होते हैं. फर्स्ट इज इंटरनल प्रोसेस. इंटरनल प्रोसेस होगा जो कि इंटरनली होगा, अर्थ के अंदर जो भी अकरेंस होगी उसको हम इंटरनल प्रोसेस बोल देते हैं. The processes that occur on the Earth's surface are called external processes. These processes occur continuously around us. एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल प्रोसेस. एक्सटर्नल प्रोसेस होगा जो कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होता है, जो कि हमारे अराउंड होता रहता है, उसको हम एक्सटर्नल प्रोसेस बोल देते हैं, और इसकी वजह से भी जो लैंडफॉर्म है वो क्या होता है, अक्कर होता है. And therefore, the Earth's surface is always changing. Let's start from the inside of the Earth. If we go a little deeper below the surface of the Earth, we will see that the land that we live on is actually made up of large sheets of rock. These are called tectonic plates. अब देखो, इन्होंने बोला है अगर हम अर्थ के बिल्कुल अंदर जाके देखते हैं डीपली तो हमें पता चलता है कि जो अर्थ हमारी है वो रॉक्स के साथ बनी हुई है, और उनको हम क्या बोल देते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स. क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स. These plates keep moving very slowly. Over time, the movements of the tectonic plates change the way the surface of the earth looks. Their movement leads to the formation of mountains, deep valleys. अब देखो, जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स अंदर जो अर्थ के अंदर मूव करती हैं तो वो अपनी डायरेक्शन कभी कभार चेंज करती रहती हैं. इनकी वजह से क्या होते हैं, क्या क्या बनते हैं, ऊपर बन जाते हैं लाइक माउंटेन्स और डीप वैलीज. And also causes volcanoes and earthquakes. Now, let's talk about how external इन टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है उनकी वजह से ही अर्थक्वेक या वॉल्केनोज जो है वो आते हैं. processes shape landforms.
forces like wind, water, and ice continuously move on the Earth's surface. These movements cause weathering, erosion, and deposition, creating different landforms. Weathering is a slow process by which external forces break down rocks. A famous landform in the United States of America, called the Delicate Arch, was formed by the weathering of stone by water and ice over millions of years. As the stone weathered, it was broken down, leaving a gap that eventually created this arch. Erosion is the process by which sediments and soil are carried away by wind, water, and ice. The wave, found in the United States of America, is an example of a landform which is formed as the result of water and wind eroding rocks. Different layers of rock eroded differently, forming these lines along the surface. Deposition is the process by which eroded जो भी यहाँ पर प्रोसेस बताए जा रहे हैं, लाइक पहले इरोजन बताया गया था, सेडिमेंटेशन एंड नाउ डिपोजिशन, इनकी आपको डेफिनेशंस जो है वो क्लियर होनी चाहिए. यू कैन राइट दीज डेफिनेशंस इन योर फेयर नोटबुक इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. sediments and soil are left at a particular place. An example of a landform formed by deposition is the dune of Pila in France. Winds eroded sand and deposited it on the shore, forming this sand dune. It is the highest sand dune in Europe. So, today we saw how landforms like mountains, plains, sand dunes, and deep valleys are created by internal and external processes. In this chapter, we will study more about such landforms and why they are important. Okay, so today we learned about how internal and external process change the surface of the earth and form different landforms. While internal process includes the movement of tectonic plates and external process includes erosion, deposition caused by the work of wind, ice and water. तो ये हमने आज के क्लास में किया है. Watch the video carefully. Okay, have a nice day.